Ya Ali Madad. Alwaaz, Abu Ali, wise number 167. They always ask that in our physical world, we are able to recognize ourselves when you look at your physical side in a mirror. Hazrat Imam in 1973 in Bombay Fatwa, he said, the soul is created with human physical form. So people say, if our reality is the soul, why then can you not see your own soul? You can see, it is in Sultan Shad Farman કે તમે તમારા રૂહને બહાર કાઢીને જોઈ શકો. Remove that ruh from your inside, let it come out and you can see it, but not with these eyes. You know, spirit, soul is a different thing, and jeev, the life force, is different. Man does not die until the jeev is there inside. And jeev is bounded by law of karma. Imprisoned. And that what we said, luxurious. In Quran also, it's mentioned that you are in the prison. Set yourself free. And that's what luxurious is. So it is the jeev that goes to luxurious. Yes. But with jeev, if there is no soul, jeev can't do anything. Our intelligence is working because of soul. Jeev is there in vegetation, in insects, bacteria, germs, animals. There is jeev. But there is a vast number of stages in the life. They have jeev, but no soul. For instance, these germs and bacteria, they have no soul. Because there isn't any intelligence in them. Similarly, a tree or a plant, it has no intelligence. So there is no soul. But jeev is there. And that jeev is either suffering or enjoying. The spirit or the soul, it's a divine status. The level of soul is divine. And soul is eternal. It never dies. Unless it goes and reunites the Almighty Allah. Still, it's a part of it. It never dies. It's like a droplet taken out of the ocean and put it back in the ocean. But jeev is a turning between death and birth. It's a revolving indefinitely till that time comes when the ibadat or the amal of the person have reached to the status where God gives him salvation and jeev is set free from this imprisonment of luxuriancy. Then there is no death, no birth. It's out of that. Now such people, they become ruhani. To these things we say spirits. Now spirits have an astral body. Each one of us has an astral body. Normally when we die, the astral body comes out of this body, which we can also do it at will if you learn in Betul Khayal. So in Betul Khayal you learn or you attain that kind of power that at your will you can come out of your body.
But there is a silver cord between this body and that floating body, The astral body. the astral body. Now, astral body has jeev, mind, intellect. The jeev that goes in the physical is transferred to the astral. No, it is with the both Or sides. Through the that cord. cord, that wire is also supplying energy to this body, so the body doesn't die. Because there is jeev also, and there is jeev also. But the major station is there in the astral body, and because of this silver cord, this body is lying but motionless. Life is there, it's not dead. And then it can come back again. So that body, it can float, it can go anywhere, even up to moon. There isn't any limit. Now, astral travel is different than this particular thing that I am explaining. When man dies, the astral body comes out and the cord is disconnected. So this body becomes absolutely dust. And the jeev Jeev is there. goes there in the astral body. Now jeev, then the seat of intelligence is man in the brain, and inside the intelligence there lives the soul. Seat of soul is in intelligence, Atla. Seat of Atla is man. Seat of man is in the brain. So it is like a set of suitcases. A big one inside the smaller one, and again inside the smaller one, and again inside the smaller one, like that. Brain has mind. Mind in itself has intelligence, and the nucleus of intelligence is soul. Now, soul is the king, and it is soul because of its presence. The intelligence is working, and that's why he says, if I make your ibadat Mawla, then I get the complete buddhi. Buddhi means Atla, and that is intelligence. Karu Sreva Tamari Sivyo Kaim Swami, to Muni Sarve Buddha. In another Gina, he says, Atla Phule Yako Farman Hazar. If you obey Hazar Imam, because of his obedience, the result will be that your Atla, your wisdom, will start working, or it will shine, or it will come out. It will bloom. So, because of the presence of soul, intelligence is working. Now, those animals who have no soul, they have no intelligence. And those who have intelligence, they have soul. Dog has, cat, lion, many animals, elephant, bear. So intelligence works with soul. And Pete says that soul is a Pran Purush. Purush means the master. Master of Pran. Pran is Jeev. And Jeev stays in the heart. Jeev is like a mechanical force, the force of life, which is also in the seed. When the seed is put in the soil, it germinates, then sprouts, then it starts its growth. Similarly, our jeev is inside the heart, and it is the heart which is generating electricity to supply the whole body
but the switch of that generator is in the mind, in nervous system. It says, in the atmosphere or in the country which is known as love. He has explained love as a domain. So he says that Prem Patan, Patan means a city, in the city of love. The Man Shuddh, pure wisdom, is Raja. Prem Patan, Raja, Man Shuddh. Shuddh means pure. This Ghar, Hriday Dharani, and the heart which is known as Hriday. Heart is the queen. As I told you, the switch of generation of the electricity, it is in the mind. Then he says, Raja Rani Betha Mahal. The king and the queen, they are living in the palace. Now the body is a palace. Raj Kare Pradhan Panchveer. They have 5 ministers to run their kingdom. They rule through the 5 ministers. These are the 5 senses. Sight, hearing, smelling, taste, touch. 5 senses are the ministers, and they are working for the body. All are happy. But then they are born a child. The child is desire. From the senses. Raja Rani Betha Mahal, Raj Kare Pradhan Panchveer, Hukam Ave or Gurtana. Have came Rehwai. Now in the pattern of love, when you love Maula Baba, the mind and the heart and the whole body through the ministers, they are absolutely in a happy state. There is tranquility, contentment and satisfaction. And that's what we get in our ibadat. But the order is, when you sit for bandagi, you both come to me. Both means the heart and the mind. So, we can't defy it. We can't neglect, we must go. What to do with the child? Because order is you both come together. Trijo came joy. Trijo is the child. Child is desire. So they thought we must go together. Let the child remain behind. They put the child in a cradle. And what is a cradle? Cradle is a swing. That means neither this side nor that side. And there isn't any stable condition of the desire. Desire is always moving from one place to another, from one condition to another. If one desire is fulfilled, immediately the second desire starts. The force of desire is one. It is centralized in that nafs-e-ammara, the place of sensual
desires. So they put in the cradle. That means left all the desires out of mind during Ibadat. Only Raja and Rani, the mind and the heart. Now it is the heart which generates the electricity and also the frequency of breath. So we are in the Ibadat, Saas to Saas, Ibadat is going. All of a sudden, in the way, the queen observes that there is a female deer feeding her child. The calf of the deer is being fed. Rani Tajyo Pran. Why? She remembered the child and her own milk in the chest pressed her so much that she died. And it happens. If a feeding mother doesn't feed the child and child is away, then the pressure of the milk inside her bosoms may kill her. And it has happened. Or if the child is sick and there is too much milk is generated, then there are pumps that can secrete the milk out. Then she is saved. So that Rani, the queen, saw that a female deer feeding her child, the calf, and she remembered her own child, and she gave her life. She died. Now, this thing is in Ibadat. There is a absolutely concentration. The heart is beating normal, breath is going normal, and remembrance of the bowl is also normal. Raja Rani both are traveling. Raja the mind, Rani the heart, and the Ibadat is going smoothly, and all of a sudden, because we have registered many things in our mind, during this process of Ibadat, someone's good fortune is remembered. Dr. Hashim is a very wealthy man. Kareem is happy and it is doing better than me. And when you have started thinking about someone, the link, the concentration is broken. Mind is there, but the heart, the force of life, its strength, its smoothness, its tranquility is disturbed. That means the queen died. હવે કેમ રહેવાય? હુકમ આવ્યો જન બેતન, એકથી કેમ જવાય? Guru Murshid has said, come two people. Alone I can't go because it's again nafarmani. So what the king did, chadar bichavi bandi gathadi, he just placed a sheet of cloth, put the corpse of the queen, took on his head. Chadar bichavi bandi gathadi, lay chalya dev ke dwar. Dead or dead, alive or alive, but they went there. So in that course of Ibadat, when the concentration is broken, then the Sadatin has given a technique. Instead of going with the pace of your breath, Ya Ali, Ya Ali, the Sadatin says, say your goal inside without using the tongue as quickly as possible. Yali, 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 yali. This is the kind of force.
when you remember it very fast, all your concentration comes back. And the heart is dragged. Chadar bichhali bandi ka chadi. Force is used here to bring back the force of life into that process of ibadat. And here you are, when they arrived, Maula Papa became very happy. When they arrived there, Sona Nidiviyam aage jagmage. Small lamps made of gold, glittering. This is the sign of Nur. Sona Nidiviyam. Glittering lamps are burning. The flame is depicting the Nur. So Sona Nidiviyam aage jagmage baitha Tribhuvarsha. They got Didar in Ibadat. Utho Ridade Rani Amipyo. He revived the life force again. Thode Davravo Bad, here is your child. A man who has gone through this process successfully and arrived at the feet of Mawla. He got the Didar of Mawla in Ibadat. Then he is given to fulfill all his desires. Khode Davravo Bad, here is your child, your desire, and all desires are fulfilled. But the desire of a woman who has attained some spiritual bliss or spiritual height, then that fellow, he matures. He is not a child, he is a matured person. He won't just demand a piece of chocolate. He is not happy with a cookie. He doesn't like any toy or other thing. He is matured. So people of Ibadat, they don't ask for money. They don't ask for Yali Baba, give me this, Yali Baba, give me this. It is his own will now to get anything he likes. He has not to go back to his father and ask any Tom, Dick and Harry things, any small bits. He himself now is earning. He has the power of spiritual and divine condition. So this Ginan in a story form, it has a lot of things. Now that man who dies, ordinary man, his astral body comes out. Man, Jeev, Atma, all together go up. Go up means that they will be directed to go here or there, wherever it is the Farman. Then this condition is Ruhani condition. Anything left unattended during the lifetime, now they will do it, or this person as a Ruhani will complete in this Ruhani form. But if he was very sinner, great sinner, did not fulfill the passing marks, he has to come back, reborn again. Otherwise, he remains up. There he prays. He has nothing to do of the sort that he was doing as a man. No children, no wife, no business, no eating, no drinking, no sleep, no other sensual desires. So there he is all the time making ibadat, going up and up. Rising and being promoted goes up. Till one day he is turned from an ordinary Ruhani into an angelhood. So he becomes an angel. When he becomes an angel, that astral body is discarded and a Nurani body is given to him. And that Nurani body is much higher than the astral body. Astral body is made of gas, like ether.
and it dissolves in the atmosphere. But as the angels are from Nur, then he is given a Nurani body. But in that Nurani body, this Jeev is discarded again, because Jeev has nothing to do with the angels. Although they are living entities, but not like humans, not like other things like vegetable, like animals, like insects. That is higher form of something which we don't know, but that is true. So they have intelligence, man, and soul. Is that a state of Mahapad? Or is it beyond? No, Mahapad is Betul Khayal. And Mahapad is in Betul Khayal when you have the Didar. That is Mahapad. So that is a stage when the queen was revived. Yes. In Ibadat, when you get Didar and Mulaqat of Hazrat Imam, that is Mahapad. But that condition that I said, that is for the ordinary man who doesn't make Ibadat. So being an angel, then he is being promoted stage after stage, till in a million or more years or whatever the time, he goes to the Malaikatul Muqarrabeen. That means those angels who are staying near the throne of God, like Jibreel, Israfil, Mikael, Israel, Ismail. These are the Malaikatul Muqarrabeen. In Quran it is said that 8 angels, they are lifting the throne of God. So they are Malaikatul Muqarrabeen. But it is not the end again. These Malaikas, they also, when the other people attain that status of Malaika Muqarrabeen, then again they turn to the higher status, and amongst them they are born as Nabis or Imams. From that soul. Now mind you, I must clear one thing here. Imamat's Nur is different, or the Nur of Nabi is different. Suppose from this angel, it is in Quran, Allah says, I sometime appoint certain angels to go into the world and become Nabi. It is in Quran. Suppose an angel is appointed as a Nabi. So he is born on this earth in a sacred family, but he is not yet Nabi. But his soul is higher soul, because he is coming from that stock of Malaika Muqarrabeen. His soul, his jeev is much higher than all other ordinary mortals. So when he is ready and God wishes to appoint him as Nabi, then Nabuwat's Nur is given to him. Similarly, Maulana Hazrat Imam, before becoming Imam, he was Shahzada Karim. He had a soul, he had jeev, he has intelligence, but that soul is coming from there, that Malaikas. And they are, right from very birth, they are immaculate, sinless, absolutely infallible. Master. Innocent. Then they are given the Nur, either the Nur of Imamat or Nur of Nabi. The present time, we don't use the word Nabi because Nabuwat ended with Muhammad, but we now use for the same Nur the word as Peer. The Peer is the second to command, in command to Maulana Hazrat Imam. Imamat is higher than Piratum, that is Nabuwat.
So then, when the Nur of Nabi or particularly Nur of Imamat is given, then they are united with God Almighty. The soul in that body and the Nur of God is just one. This is the gist of Ismaili Batuni Tariqa, that we say Imam as God, not in his physical form. God has no physical form. God is not directly connected to any material stuff. He is beyond that, and that is Nur. The soul is Nur. So the soul of Imam or the Nabi, when they become Imam or Nabi, it becomes one. What is Miraj? Miraj was the same thing. The soul of Rasulullah, Muhammad Rasulullah, and the Nur of Allah, they united. Body was there. Body is just a container. So these are Malaikatul Muqarrabin, from them this higher being come, and they fulfill the things, because the body has a limit, 50 years, 100 years, 150 years, or like Hazrat Nuh, 950 years, even 1,000 years. But the life has a limit, body has a limit, so they have to go back. But that soul, go back means out of this body, and body is discarded. Now because that body has in itself contained Nur for a couple of years, the body becomes so pious, divine, that even if you bury it after 1,000 years, you can dig it out intact. The earth does not eat the body of Imams and Nabis. It doesn't decay. It doesn't decay. So when Imam speaks of mazhar, it is, as you have explained, that the Nur is contained within the body. And that is the mazhar of God, manifestation. Just as Allah says, we have made Muhammad Rahmatul lil Alameen. The mercy, God is merciful, isn't it? So the mercy of God was personified in Muhammad. So Muhammad was the manifestation of Allah's mercy. This is the same way as Imam, as Christ was manifested as the word of Allah. And you know the daraja of Pir and the daraja of Baitul Khiyal Bol, the word, from where that word came? It came from Imam. That means it came from Nur of Allah. So that word is command, and that the daraja of that is peace. In Brahm Prakash we say, Sat Shabd hai Guru Hamara. My Peer, my Guru is Sat Shabd, which is given by the Imam. So actually the bowl, Baitul Khiyal's bowl, is Nabi. Baitul Khiyal's bowl is peace. And it carries us to Mawla, to the Nur of ultimate. So that ordinary man and that man who has attained Nurani Darajah during this life are two different people. Now this man who has seen Hazrat Imam in Ibadat, he has attained the Nur of Didar, then the death is his choice. Whenever he wants to go, he can go. Or if he wants to linger more, he can. He can avoid. There isn't any particular set time for this man to die. He decides when to die, where to die, and how to die.
But then those people who experience the Noor in Ibadat, then they don't want to live here unless some special work or duty is given to them. They don't want to live here. They want to. Because this whole world is full of sorrow and pain. But if they want to live, they will live. They decide the time of death. And they decide the mode of death. And as soon as they leave this world, it is not like that I just explained to you, that other person, his earthly body comes out, then he makes ibadat for a couple of centuries, goes up, becomes angel, and then rises to the long process of malaikatul mukharrabin. It doesn't happen with this man. He leaves this body and immediately goes up with more. There isn't any long way for it. No process in between. Unless his daraja is little bit less, then he becomes the angel directly. And after a few time, the long or short time decided by Mawla Baba, so he attains the Wasal Haq, Fana Fillah. So when he becomes Fana in God, so he becomes Baki. Baki means he remains forever. But he remains forever in Mawla's Nur. So Fana Fillah and Baki Billah. Sufi speaks of Baki Billah. We people normally, we normally in our Jamaat, people don't know what is Baki Billah. So Baki Billah, the ego is alive in your Pamarina Tavino. Khuda mein aya to mujhe in jo personality khuda mein rehto na. Everything is living in God. Even this sofa, this house, this whole earth, the whole universe is in God. Panjo je khuda, panjo je fanafila theda to panjo individuality, personality mari vene to na, like extinct thai vene to. मौलाना सुल्तान शाह फरमायूं कि समुंदर में से दरिया में से तू अकड़ो गिलास पानी जो गिने, so long it is in the glass, its own entity is different. पानी पाछो तो पानी इनमें समुंदर में विजी दिए, पानी गिलास जी entity खलास. અને બીજો આપણો ચીજ છે કે જે જનાવર કે ઇન્સાન જે ઓછા શ્વાસ કિને તા એ વધારે જીવે તા. દાખલા તરીકે કે ટર્ટલ જાય દાખલા મિનિટ में 2 વખત શ્વાસ કિને અને ઇન્સાન આઈ 15 મિનિટ 15 વખત શ્વાસ કિને અને પુસી આઈ 25 times અને ટર્ટલ જે લાઈફ સ્પેન હોય 200 years અને પાછળ દુનિયામાં આવ્યા પાંચે પાંચો લાઈફ સ્પેન નક્કી કરવામાં આવ્યો પછી પા ઇબાદત કરીને પાંજા શ્વાસ પા ઓછા કરે તા એટલે પાંજો લાઈફ સ્પેન વધે તો એટલે પા પાંજો નક્કી કરેલો ડેથ કે પા બતાવી જતા ને તો એનો મતલબ થયો કે दरेक नॉर्मल इंसान के 21,600 रोज इनके दम श्वास गिनन जाए, ये एवरेज है. पर जे मारू दुनिया जी अंदर बहु વધારે ખેણી પીણી ને એક્ટિવિટીઝ એડી હું કે जिनके कारण इनका श्वास वधी वेना तो डेफिनेटली इनकी उम्र शॉर्ट है. मैंने इबादत के अंदर मोशनलेस कंडीशन में मारू बैठो है तो हार्ट बीट पर्टिकुलरली जैसे कॉन्सेंट्रेशन थी वेने तो हार्ट बीट है ना ये बहुत स्लो थी वेने. नॉर्मली एकड़ो यंग मैन हुए अने ये बैठो हुए तो इनकी हार्ट बीट 76 हुए
अने कोई 60 65 70 वर्ष जो माण्हू वेठो हुए तो इनजी पल्स जी आहे इनजी हार्ट बीट अबाउट 60 हुए अने इबादत जे अंदर 40 સુધી અચી વિને इवन 20 સુધી અચી વિને અને नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो 32 से नीचे हार्ट बीट हली भी नहीं तो मारू मरी गए એટલે 32 से नीचे हार्ट बीट डेंजरस कारण के सजे शरीर के अंदर इन जो ब्लड सर्कुलेट न थिए અને સફિશિયન્ટ ઓક્સિજન બ્રેન ટિશ્યુ के न मिले तो ब्रेन मरी वने અને જો ब्रेन में डिजीनेस अची वने कोमा अची वने तो हार्ट मथे तकलीफ थी पर इबादत के अंदर जडे बिल्कुल कंसंट्रेशन लगी वने तो हार्ट बीट इवन 20 સુધી अची वने और उन जो कोई आफ्टर इफेक्ट साइड इफेक्ट खराब इफेक्ट की नहीं इन जो कारण ब्लड जो सर्कुलेट ना थी होय तो ना इन जो कारण पूरो के सोल जी जे ताकत है पोते जी ई प्रिवेल करे थी सजे शरीर में करो प्रिवेल हां ब्लड जो सर्कुलेट ना थी ब्लड जे अलावा पांजे अंदर प्राण है प्राण मीन्स एनर्जी ना रकड़े ज्ञान में है कि जडे इबादत करे तो घट के अंदर सजे शरीर में 3.5 करोड़ दैट मीन्स 35 मिलियन पोर्स पांजे शरीर में आए पांचे तो गिना नहीं 35 मिलियन छिद्र आई पंजे बॉडी के अंदर 35 मिलियन पंजा पोर्स आया अने दरेक पोर के अंदर हिकिड़ो नंढो वाड़ आहे हेयर आहे अने जॾहिं तूं इबादत करें तो पी चवनि था कि ई दरेक 35 मिलियन जे पंहिंजा पोर्स आहिनि 3.5 करोड़ यानी 8 करोड़ रोम्स ई मड़े इबादत जे अंदर हिकिड़ा ठही वञनि तो सोल जी ये रूहानी ताकत है नूर की जो शक्ति है ये सजे शरीर में फैलाई गई यानी इन जे लीधे ही एनर्जी जे सोल में से निकले थी नॉर्मली एनर्जी हार्ट में से निकले थी पर इबादत के अंदर एनर्जी सोल में से अच्छे थी थ्रू माइंड એટલે આચા હકડા થઈને વાળ હકડા થઈને એને જો મતલબ કરો કે सज्जो शरीर the whole complete body up to his skin is under the bliss of that spiritual power energy and in जे लीधे इंसान जे शरीर जे अंदर सुख ने शांति है इन जे लीधे अमुक बीमारियों मटी वेंदन इबादत जे करण से घणी बीमारियों मटी वेंदन ना नॉर्मली हम तो के एग्जाम्पल लिया कि जे माण्हू रोज इबादत करे अने राइट कंडीशन में करे इनके कोई भी ब्लड प्रेशर हैरान न करे बियो इन जे हार्ट जे अंदर जी जनरेटिंग कंडीशन है ये करेक्ट थई वने जो खराब हुए तो ठीक थई वने त्रियो इबादत करण जे कारणे जडे नूरानी शक्ति सजे शरीर में मिक्सअप थी वने तो अंदर जे पॉइजनस अने टॉक्सिक मैटर है पंहिंजे ब्लड जे अंदर ई क्लीन थी वने न्यूट्रलाइज थी वने अने इन जे लीधे कैंसर जड़ी बीमारी पर न थी वने कारण के कैंसर जो कॉज एक्चुअली टॉक्सिक है अने इन जे लीधे जे सेल्स आहिनि ई मरण न था पर मल्टीप्लाई थी घणी चीजों शरीर जी अने माइंड जी इबादत के अंदर रिवाइव थी करेक्ट थी अने पावरफुल थी जी जी माण्हू इबादत में नॉर्मली अॻियां वधे तीअं तीअं दुनिया जी डिज़ायर ओછી थींदी वञे हिकिड़ो माण्हू आहे
बचपन जे अंदर इनके खेड़ो पीनो हिरनो फिरनो खपे यंगस्टर आई इन जे अंदर घणी जाति डिजायर्स पैदा थी इंक्लूडिंग सेक्स अने ही एबनॉर्मल हालत में हलियो वञे पण इबादत करण से ई बड़े चीजों जे कंट्रोल में छे I'm questioning about the seat of the soul in the What about when a person is brained and is in a permanent coma and they what they do is transplant take the heart out and then put it in another body? It's a physical, material or little semi-material process. Nothing to do with soul. If the brain is in coma, that means the conscious side of the brain is cut off. But subconscious is always there. And a heart is removed, but side by side the machine is pumping new blood inside. Because without a heart, the circulation of blood is not there. But with the help of the machine, nothing wrong. Nothing wrong. But so far, success is very minute. Very minute. I have seen on television a small boy given a mechanical heart. After a few years he will be operated and a new battery will be added to his mechanical heart. His own heart is there, but next to his heart another small mechanical apparatus has been put inside. Now pacemaker is different. This is the mechanical heart. Because one chamber of that boy was not working. And you know how old the boy? Just few weeks. So heart is just a carburetor or a pump. But heart has some connection with the brain. When you are very happy, the heartbeats increase. When you are in fear, the heartbeats also jumps too much, and it generates adrenaline, so that you are given a little power. So heart is controlled by the brain. So feelings are there too in the heart. When you are at rest, heart is also resting. So heart is just a machine, but it has some kind of connection with the mind. Always exercise જ્યારે સ્ટ્રેનિયસ એક્સરસાઇઝ કરજે રાઈટ એટલે પાંચ શ્વાસ વધી નતો એટલે ઓક્સિજન વધારે ગયું એટલે ઓક્સિજન કારણે પાંચ બોડી બુઢો થયો ઓક્સિજન જે કારણે બોડી બુઢી નથી થઈ બોડી જો બુઢાપો જે હોય ને ઇટ્સ deposit of poisonous and toxic matter. And the oxygen creates or gives energy. And akdo madu ke je bilkul hilchal na kare in je sharir je andar fat deposit thini vine bachcha di pehla જ akde report આવી કે akdo madu એ ખાઈને અકડે રૂમ में रहे 13 વર્ષ થયા એ પોતે જે રૂમ में से બહાર ના નીકળ્યો 13 years અને 1350 પાઉન્ડ ઇજો 1350 પાઉન્ડ ઇજો વજન થઈ ગયો હા સુને અને એ બીમાર પ્યો તો એની કે દરવાજો તોડ્યો ખપે કારણ કે he could not be removed from the door. અને એને મારું જે ઉંમર લંબી નથી કે ટોક્સિક મેટર ને પોઈઝનસ મેટર બહુ વધારે ડિપોઝિટ થઈ ગયો એમ કે ઓક્સિજન બહુ ઓછી મિલી
અને ઓક્સિજન વધારે મિલન से ઘણી ખરાબ ચીજો બર્ન આઉટ થઈ વञनि, એનર્જી વધી વञे અને એનર્જી વધन जे कारणे परफॉर्मेंस जे आहे पंहिंजे शरीर जी ग्लैंड्स ने ॿिया जे पंहिंजा ऑर्गन्स आहिनि इनजी कैपेसिटी वधी वञे, इनजी परफॉर्मेंस वधी वञे, इनजो दर्जो वधी वञे, इनसे लाइफ लंबी थिए. પણ વધારે શ્વાસ કે ન હોય તો પાંચ જેટલા ઓછા શ્વાસ કે જેટલી લાઈફ લંબી છે પણ વધારે કે ન હોય એક્સરસાઇઝ થકી તો એ બી પાંચ લાઈફ શોર્ટ નથી ના, કારણ કે એનર્જી વધારે છે ને, એનર્જી ક્રિએટ થઈ રહી છે, एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट થઈ રહી है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज. इबादत के अंदर ऊंधो है, इबादत में तो जी एक्टिविटी की है અને इबादत जे कॉन्सेंट्रेशन के कारणे અને જે પાંજે સોલ જે અંદર જે સ્પિરિચ્યુઅલ એનર્જી है એ रिलीज थी है, जैसे उनके अंदर मैकेनिकल एनर्जी रिलीज थी है एक्सरसाइज में. तो एक्सरसाइज से तंदुरुस्ती बढ़े, पॉइजन ओછી थिए, टॉक्सिक मैटर ओછો थिए, ब्लड વધુ ક્લીન थिए અને ઇન્જે લીધે લાઈફ સ્પાન વધે. Energy to grow. Form like Energy is yes, it's a mechanical force also, and also there is spiritual energy which is not mechanical force. We have two kinds of energy: the material energy, mechanical energy, and the other is spiritual energy that is coming from God. God himself is the source of all energy. Electromagnetic energy, is that mechanical energy? Because you can feel it in magnets, right? So that would be mechanical. And in you, or in me, or in everyone, there is electromagnetic energy. Where there is electricity, there is magnetism. Without electricity, still magnetism can work. But electricity is always carrying the magnetic force. Physics वांचो खपे. न पंहिंजा जे ब्रेन जी जो वर्किंग है, ये ब्रेन जी वर्किंग में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट थिए थी पंहिंजे आजू बाजू में, जिनके चवनि था थॉट वेव्स. अने ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनके मथे पंहिंजा थॉट्स ट्रेवल करन था. अने जो तू ही प्रैक्टिस सीखी गए तो आऊं कराची भी ना तो तू हिदा से वेठे वेठे वैनकूवर से मुके कराची मैसेज हलाई सके. That is known as telepathy. It's again an electromagnetic force. અને इनके अमाल होते हैं, जो इनके अमाल सारा हैं तो इनके पाछू अचन की जरूर ना खुदा इनके मथे ज रखे. पर जो इनका अमाल खराब हूं, कोई जो खाधेलो है तो ॾियणो खपे पाछू, कोई मथे जुल्म करे हुए तो इनकी सजा भुगती खपे, तो इनके पाछू खपे. जो अमाल सारा हूं तो इनके पाछू अचन की कोई जरूर ना. ह्यूमन लाइफ तो घनी है, एटलीस्ट 8 वक्त. खुदा जी जितनी पण क्रिएशन है ये परफेक्शन की तरफ वञे थी, इवॉल्व थी थी. ये एवोल्यूशन है ये मैटर में पण है અને स्पिरिट में पण. माण्हू जॾहिं गुजरी वेंदा ये स्पिरिचुअली इवॉल्व थी. अमुक वर्षों पछी खुदा इनके हायर स्फीयर में खड़ी वेंदे, इनसे हायर स्फीयर में खड़ी वेंदे. हजारों दर्जा है, पगथिए स्टेप बाय स्टेप ये स्पिरिट ऊंची नीची हली वेंदे. घणा माण्हू आहिनि इस्माइली अमुक आहिनि पण पंहिंजे માટે સારું ના ઇસ્માઇલીએ માટે, કારણ કે બેતુલ ખ્યાલ जा મેમ્બર आहियूं. અને ઘણા એડા मीडियम्स आहिनि કે જે
अहिड़ी ज रीते हिकिड़ी राति जो मीटिंग करनि, पोइ बत्तियूं ठाहे ॾिननि, 2 निम जी हिकिड़ी बत्ती रखनि, अने पोइ कोई गिलास गिनी के कोई चीज प्लेट गिनी, ये लोगों को फ्लोटिंग जो स्पिरिट्स हों इन्हीं के ही लोगों को बुलाई, रूहानियों के बुलाई। एड़ा सियांसिस घना थीन था, अने ये लोगों को शौक करन, अने एक्चुअली आवाज रूहानी वटे नथी विने, पण इन जे मन जी जे थॉट वेव्स है ना, ई मथे विने, अने कोई रूहानी अची विने, अने रूहानी अचे तो इन जो जे एपरेटस हुए, ग्लास हुए, प्यालो हुए, बोतल हुए, इनके अंदर एनर्जी अचे, अरे इनके फील थिए कि हाँ ये आयो है, तो इनको इनके साथ ये लोग नक्की कर कोड वर्ड्स बनाए, इनके बोतल ही हिले तो मीन्स नो, अने ही हिले तो मीन्स यस वगैरह एड़ी रीते पोते जो कोड बनाए लैंग्वेज, अने ही जे रूहानी अचन थी ये सियांसिस में रूहानियों साथे जे कॉन्टेक्ट करन था, ये 3rd क्लास रूहानी, लोअर क्लास रूहानी के जिनी के मुख खुदा ताला पनिश करे कि भाई एटले वर्ष सुधी अहीं लोग खाली फ्लोट करो, इनके असी छो पंहिंजी भाषा में अवगतिया जीव, इनी जी गति नहीं थई, ना तो जमीन मथे अची शकन ने ना आसमान मथे वञी शकन, हेॾां जी लोग फ्लोट करना। अने इन्हीं में जे इविल स्पिरिट्स हुन, जे बदमाश रूहानियों खराब आहिनि, क्रिमिनल आहिनि, इन्हीं के फ्लोट करन जी रजा ना, ये तो हिकिड़े पर्टिकुलर जगह ते जेल में आहे, अने दे कांट कम आउट, कोक वक़्ते निकिरी अचे, but otherwise they are in prison in particular place. अने ही जे रूहानियों सियांसिस में अचन, ये अवगतिया जीवो थोड़ी थोड़ी चीज के चई दी, पण वधारे न चई सके, अने इन्हीं में बंदगी वगैरह करे, गुनाह जी माफी मंगे, तौबा करे, पछी ई फ्लोट करने वाली रूहानियों में पण हायर स्टेज में जे खुदा तारा तरफ मिले, तो ई एड़ी रूहानियों जे ई लिमिट जे बाहर हली वे न, कोई सियांस में ना छे, ई ना छे। ओके, हिकिड़ी छोकिरी चवंदी हुई के मुंहिंजे स्कूल में न के इन जब फ्रेंड्स हिते रूहानी साथे करणा हुआ स्पिरिट्स, तो हिकिड़ी कहता कि बाथ में विया तो आड़ी स्वाको टूटियो न लॻ ॿिए मरी वियो, एड़ो खराब प्ले किया उन लोगों कि जिनके लीधे रूहानी तोड़ी छॾी, की मारी छॾी, सही है। जॾहिं कोई माणस गुज़रीने પછી છાંટવાની પ્રક્રિયા કરો था, he necessarily that purify the person. Oh yes, certainly. But it does not purify 100%. ये छंदो पूरो है कि मुझे बापा गुजरी गया, ने आऊं मुखी के चाहतो, मुखी बीइंग हाजिर इमाम रिप्रेजेंटेटिव, आऊं चाहतो मुखी के कि मुझे बापा के मुझे वती से छंडो दियो कि मुझा कोई गुनाह मुझा बापा किया हूं तो आऊं मुझे बापा के माफ करा दो, अने आऊं मुझे बापा जब गुनाह कियो ई पाऊं साइड बाय साइड सिमल्टेनियसली आऊं माफी मांगा तो मुझे बापा अने मुझे अंदर जे लेन देन जो लॉ ऑफ कर्मा जे कारण की पण हिसाब किताब हुए ई क्लीन थई वञे, तो मुंहिंजी खातिर मुंहिंजा बापा पकड़ाए ना। एडी ज रीते जेतरा पण घर जा मेंबर्स आहिनि, फैमिली मेंबर्स, ई लोग छंडो ॾियनि था। एक्चुअली इन्हीं के छंडो ॾियणो खपे, पण इमाम जी शक्ति मुखी कमड़िया वटि आहे, એટલે મુખી કામડિયા जो જે દરજ્જો है એ असी यूज करूं, अने मुखी कामड़िया इन्हीं के मुझे वती से गुनाह जी माफी दिए, अने साथे साथे आऊं मुझे बापा के गुनाह जी माफी मंगाता मुझे बापा वटे से, એટલે ही अरस परस आकड़े बेचो सबद क्लीन थई वने। पर्सनल चीज ना रहे, अने पाके पांजा वडीलो थिया के दाख के बॉम्बे में हिकिड़ो कोई तो जो यार दोस्त या सगो कुटुंबी गुजरी वियो, अने तुंहिंजो ईंदा समर लिखाए थो, पर उन वक़्ते जे तुंहिंजो सगो कुटुंबी गुजरी वियो बॉम्बे में,
अने इंजो तू समर लिखाए तो ई समर जो मतलब बनी जाए कि मुंजो की गुनो ई कही है आऊं इंजो की गुनो कियो है तो ही अरस परस माफ थिए अने इंज माटे मेहमानी हलाया तो ये इनके सवाब मिले ते छता आ समर न पण लिखा जाए અને કોઈ પણ રૂહાની जिन સાથે પાંજી થોડી ઘણી પણ ઓળખાણ હોય जॾहिं इनजी न्यूज़ पाण खे अचे कि गुज़री वियो तो उन वक़्त तूं दिल में चो या हूंदा मुंहिंजा की गुनाह कई हुए तो आऊं इनखे माफ़ करा थो अने आऊं इनजा की गुनाह कयो या तो तूं मूंखे माफ़ कर એટલે ही स्लेट क्लीन थी आई पण ते छतां घणा अहिड़ा आहिनि कि जो गुनाह रही वेंदा या जे माफ़ी न ॾींदा कि रूहानी के पनिशमेंट मिले या तो इनके पाछो बनायो खपे बाकी इमाम जा गुनाह जे आहिनि मज़हबी गुनाह आहिनि ई पाण खे मौत वक़्त जे मुखी कमरिया मादिन जो छॾो ॾींदा था इनमें बख़्शाए अने पण फाइनल जजमेंट ई तो मौला वटि आहे मादन जो छांटो जो एज लिमिट होए मादन जो छांटो जो एज लिमिट है महाजन जे छॾ जी एज लिमिट न आहे पर इट इज रिजर्व फॉर वेरी ओल्ड पीपल सपोज हिकिड़ो माण्हू यंग में गुज़री वञे त इनखे जो सवाब न मिले न कुल न मिले यंग गुज़री वञे तो मुखी कमड़ीअ जे जमात वती से छॾो ॾींदा था दैट इज महाजन जो छॾो इवन आफ्टर डेथ त कोई मूंखे चयो कि कोन्हे मां पप्पा मादन जो छांटो न अहिड़ो की न मुखी कमड़ीअ जे छॾो ॾींदा को माण्हू गुज़री वञे थो तो मुखी कमड़ीअ घरे वञी इनखे छॾो ॾींदा मयत खे ई मादन जो छॾो आहे अने घणी वक़्त ईअं आहे कि हिकिड़ो माण्हू बीमार आहे अने इनखे हाणे कंडीशन जी ख़राब आहे डॉक्टर चई ॾिनी कि ही बचे नहीं तो कोई फैमिली मेंबर मुखी कमड़ीअ खे चवनि था इनखे छॾो ॾींदा मौत पहिलापन मिले थो ने नहीं ठही सघे तो कोन मौत પછી ॾींदा मौला बापा तो मोड़े ठिकाने नथा मिले This is casting correspondence between intelligence and soul. So he implies that the level of intelligence also corresponds to the level of spirituality. Like the more religious a person is, the more intelligence he is. Certainly. पण इनजी जे इंटेलिजेंस आहे इंटेलिजेंस में जे ब्राइटनेस अचे थी नूर जी 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 माण्हू इबादत करे इनजी इंटेलिजेंस वधनी वञे पण इनजो कनेक्शन दुनिया जी डिज़ायर में से ओछो थी न वञे ही इंटेलिजेंस ज़रूर बहु वधे इनजी इंटेलिजेंस इनके फ्यूचर जी फोरकास्ट करण जी शक्ति मिले कालकुरो थियण वारो आहे ई इनखे ई मिले ई की मंगे तो ही पूरी थिए पण जे माण्हू रूहानी शक्ति में जी अॻियां वधे ती ई माण्हू जे अंदर स्टेबिलिटी ने मेच्योरिटी पण अचे कोई दुनिया जी चीजूं ई मंगे ज न दुनिया जी तरफ़ इनके अभाव थिए इनके अंदर डेफिनेटली इंटेलिजेंस वधे पण ही इंटेलिजेंस दुनियावी इंटेलिजेंस करता सही चीज है दाखला तरीके हिकिड़ो साइंटिस्ट आहे बहु इंटेलिजेंट आहे अने इन जे हिसाबे ये एक्सपेरिमेंट करने जो खुदा की मर्जी थी है तो तिनके हिकिड़ो इशारो करी दिए खुदा अने ये कोई नवी चीज डिस्कवर करे या इन्वेंट करे पर ये खुदा ताला की मर्जी हुए तो मौलाना हाजिर इमाम 82 में दार सलाम आया तो ये फरमान भी ठिकाने पर बतले कसीर की आई कि भाई हिकिड़ो साइंटिस्ट आहे ये साइंटिस्ट जो खुदा के न मने तो इनके ही खबर नहीं थी पे कि इन जो ब्रेन पर खुदा बनी है उन्हें खुदा की मर्जी हुए थी तदे खुदा इनके गाइड करे तो कि ही साइड में तू विन नहीं कर इसलिए इनके क्लिक अचे इनके इंस्पिरेशन थी है तो ये इन्वेंशन करे कि कोई डिस्कवरी करे उन्हें खुदा की मर्जी हुए तो इबादत वाला जे इंटेलिजेंट माण्हू थीन था
तो ये साइंटिफिक के मटेरियल स्टेट में से हटी वेंदा, ये हटी वेंदा। पर लगे के साइंस जो लॉज ने केड़े था कम करे लगे खबर हुई थी ना, इमरे नॉलेज लगे को ऑटोमेटिक थे बराबर। ये रूहानी नॉलेज पीरों ने इमामों वटे आई है ना। मौलाना अली दुनिया में मुसाफरी जी न किया, मक्का मदीना એટલે અરેબિયા, સઉદી અરેબિયા, યમન અને ઇરાક, બસ એના સુધી જ મૌલા ગયા। इजिप्ट में के कुवैत में के ईरान में के टर्की में मौलाना अली न विया हुआ। हिकिड़ो यहूदी एक्चुअली मौला जी मस्ती करण माटे मौला खे पुछई कि या अली तुम सुना तो ऐं बहु इल्म वारा आयो। मौला फरमायो तो के पूरो पुछणो आहे, तू पूछ। तो ही चई कि या अली ऐं मूंखे नाला ॾियो कि कहिड़ा जानवर अने कया कया लिविंग थिंग्स माँ जे पेट में से डायरेक्टली वूम में से जहिड़ी रीते इंसान पैदा थियो आहे अहिड़ी रीते पैदा थियनि था, अने कया कया जानवर आहिनि कि जे एग में से पैदा थियनि था। हिते इमीडिएटली मौला इनखे फरमायूं कि जिन जा कन ॿार आहिनि ई माँ जे वूम में से डायरेक्टली पैदा थियनि था, अने जिन जा कन ॿाहिरि न आहिनि ई एग में से पैदा थियनि था। इमीडिएटली ई कम फैक्ट आंसर नारे अज दी सुधी चुनार जितना जानवर एग में से पैदा थी इन जा कन बात नहीं। अरे ही नूरानी नहीं तो आज से 1400 वर्ष पहला केड़ा साइंस हुई है अने मौला तो खास मुसाफरी न किया हुआ। પણ રસૂલ એ નહીં છે કે જો આપણો માણસ સાયન્ટિસ્ટ હોય મિશનરી બી હોય, એનો જે દરજ્જો ખાલી મિશનરી એકલો હોય એનાથી વધારે ઊંચો, અને જો સાયન્ટિફિક નોલેજ મંદીથી અચી શકે તો આથી સાયન્સ સ્ટડી કરવાની જરૂર કરો ના। ॻाल्हि है कि जे नॉलेज तो के इबादत में मिले थी वो ई साइंस जी नॉलेज अहिड़ी रीते नथी मिले, इनके एप्लीकेशन करण जे माटे तो सिखियो खपे। रसूलुल्लाह तो नबी हुआ पण ते छतां वांची न शकना हुआ। त्रिकाल किनान हो, बड़े जात जो इल्म हुओ पण रसूलुल्लाह वांची न शकना हुआ। पण ते छतां जो इन्ही के खपे तो ये वांची શકે પણ વાંચી ન શકના हुआ। અને खुदा ताला पर्पसली मोहम्मद के इलिटरेट रख्यो। इलिटरेसी जो मतलब एटलो कि वांची न शकना हुआ। ये हिकिड़ो वॾो प्रूफ है कि कुरान जहिड़ो कलाम अहिड़े माण्हू जे मुंह में से निकिरियो कि जे कोई ॾींहुं अलिफ बे ते अल्फाबेट वांची न लिखी न जेको जे पर्पस बिहाइंड। बदर जी लड़ाई थी, ये बदर जी लड़ाई में रसूलुल्लाह जा हिकिड़ा काका हुआ अंकल अब्बास, ये पकड़ाना लड़ाई में हुआ अने काफर लोग को लड़ाई हारी गया, घना बची गया, 70 आदमी पकड़ाई गया। ये जे प्रिजनर थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, इनमें अंकल अब्बास है हो। अने अंकल अब्बास के ही थियो कि हम मोहम्मद जे सामने पूरो मुंह देखाड़दोस एटले विंदो न हो कोई। रसूलुल्लाह फरमायो उनके बुलायो खड़ी अचो। नबी साहब फरमायो कि ई कैदियों में जे माण्हू इल्म वारा आहिनि दरेक माण्हू दो माण्हूअ खे लिखणो वांचणो सिखाए, अने दो माण्हू लिखी वांची 6 महीना लगन 12 महीना लगन, जॾहिं ई दो माण्हू लिखी ने वांची सीखी गिननि तो इनके फ्री करी दो। खाणो पीणो ने रहण जो सगवड़ ॾेई ॾिनी, पण जे सिखाइण वारा टीचर हुआ इन्ही खे सेपरेट रखियो। पोइ फरमायूं कि जे माण्हू
એટલી અમુક રકમ દે ફાઇન તરીકે તો એમ કે છડી દો અને जिनमें पैसा અને इलम कोई चीज न हुए इनके हकड़े के वर्ष सुधी खेतर में कम कराए એટલે ગુલામ તરીકે કામ કરે અને જે બાઈઓ પકડાણીઓ इनके चौके घरों में भी नहीं गुलामड़ी तरीके मेड तरीके कम करो અને अब्बास मालदार हुआ तो हजरत अब्बास पूछा कि या मोहम्मद हम पूरा करा फरमायो कि इन्हीं के दो जने के तू दिखनो वांचनो सीखा इचे एटले टाइम सुधी आ वेटा रोन न तो मगर फरमायो तो तू जो फाइन भर इचे मुझे वटे पैसा नहीं अरे रसूलुल्लाह इनके चुनता है चाचा तो जे बेडरूम जे फलाने कोने में तू अकड़े मिट्टी जे पॉट में सोना अने चांदी जी मोहरो तू दफन थी आई है वो तू कट हैरान थी गयो इनकी वाइफ के खबर न हुई अने घणी वक्त मारू वाइफ से संताड़न था ये प्रूफ है अच्छा या नबी तडे जे मुंह में से निकलियो कि या नबी आके ही चीज खबर है इन पछी इन अंदर ईमान पैदा थयो फाइन भरी दे अने रसूलुल्लाह तो उड़ा ना दिया पण ही नूरानी ताकत तो लिखन जे वाचन से के दुनिया की साइंटिफिक चीजों करण से ही इबादत के कोई डायरेक्ट संबंध नहीं करनो वो मौजज़ो तो करी सके અને ही एनर्जी पर दुनिया की चीजों में वेस्ट नहीं है कालारूड़ा मिशनरी आकड़े जे गुस्से थे आकड़े रिपोर्टर मथे आर्या समाजी हुओ कि नजर भरी ने ना रही तो उनके पेट में दुखाव चालू थी कालारूड़ा हली आया इनके पुठिया लोग आया वो तो माफी मंगी ने कालारूड़ा ने छड़ी दीधा सुल्तान मोहम्मद शाह वटे गाल पहुंची तो अमुक दी पछी मेहमानी हुई इनमें कालारूड़ा बैठो साहब इनके हमेशा भगत जो भगत कालारूड़ा भगत तो हाणे तू माड़ुए जो मथो दुखाए तो पेट में दुखाव पैदा करे तो इन माटे तो के इबादत की शक्ति दीदी से खबरदार जोड़ो कम किए એટલે શક્તિ है ना जे पावर बहुत डेंजरस है इनके मौला तदे दिए कि जडे इनके डाइजेस्ट कर सके नहीं तो कई पावर मिले तो तू पूरा करे तो पाके जो पावर मिले तो पाके खुदा साथ साथ इन जो इल्म भी देके कितने वापरन जो राइट ये चीज है ना कि मौला तदे दिए तो जडे डाइजेस्ट करे की शक्ति जड़ी रीते माँ बच्चे के ऐसी चीज न दिए कि बच्चों मरी भी नहीं या बीमार हुए he the power it's mainly for your own protection because you never use ना ये अपनी पोते की प्रोटेक्शन तो ये तो खुदा करे दो ये जो रूहानी पावर है मौला इनके भगत कालारूड़ा के फरमाए कि तू माड़ुए के ही रास्ते पे लगा तो जी जे ही पावर है ये यूजफुल थी बे माटे बे जो भलो कर अने बे जे भले करण में इंसान के घनी तकलीफों आई ये तकलीफों जो तू सहन करे ते छता बे जो तू भलो करे मौला को राजी थी तो जी वास्ते स्पिरिचुअल पावर खपे जरूर खपे स्पिरिचुअल पावर खपे पहला तो के मौला जे प्रति वफादारी ने फरमान बरदारी थी तो तू ही कम करे अने जडे तू फरमान बरदारी करे तो जे आत्मा के जो सवाब मिले जी पावर मिले तू इबादत करे अहियां पावर वधे 10 बराबर थी ત્યાં पावर वधे એટલે કોઈ તો એક્યુમ્યુલેશન થી નહીં વધે પણ હંમેશા યાદ રખ તું પોતે બંદગી કરે ને મથે ચડે ઓકે પણ મૌલા ચોંતા બે જો બંદગી જો ભલોડે તો जी बंदगी जी ताकत बे जे दुख दूर करण में बे के सुख शांति दे में बे जी बीमारी दफे कर घनी दुनिया के अंदर दुख की चीजें इनके जिनके अंदर तू पोते जी एनर्जी इनके न थोड़ी है तू ई एनर्जी जो लाभ दिए तो समझ आती है जो डिफरेंस कर रहे हैं सपोजिंग आई खीसे में पैसा हुए
તો તું કોઈ કે પૈસા દે તો तुझ्या એટલા પૈસા ઓછા થઈ ગયા, બરાબર? પણ તું પૈસે વાળું આવીએ તો તારી નામના ને ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય કે ના? तो तू बैंक मैनेजर के खाली टेलीफोन करे कि भाई अब बोलिए अच्छे तो मुझा काका इन मुझा बापा नहीं आए, इनके तुम मदद कर, तो तुझा पैसा ओछा नहीं पण तुझे इन्फ्लुएंस के कारण ओके पैसा मिला. ऐसा एनी रीते इबादत वालों जो माड़ू है ये खाली दुआ करे, खाली ही नारे, खाली इनके हाथ अडाए तो इनकी एनर्जी लगे. पांजी एनर्जी शरीर जी त्रे डिफरेंट तरीके से यूजफुल थिए थी थ्रू आईज के तू कोई जी तरफ नारी अने पोते जे मन जे विचारो के तू इनकी एनर्जी दिए. बई चीज ये है कि तो जो हाथ है ना इन जे शरीर के टच करे. त्रे चीज ये है कि तू जीभ से इनके दुआ दिए तो एटमॉस्फेयर में ये दुआ जो तू बोले वाइब्रेट करे ना तो इनके माइंड में असर करे. अने ही ज त्रे चीजों त्रे वक्त दुआ जे अंदर जब दुआ खलास थी थी तो राइट लेफ्ट असी हिकिड़ी ॿिए जी अख मिलाई, असी हथ मिलायूं था अने चऊं था शाजो दीदार. हथ से हथ मिले, पाम टू पाम. घणा माण्हू शाजो दीदार की ना ये खाली आंगળી સુધી अहिड़ी रीते करनि. ये ना it must be palm to palm like this. ये अंगूठो वञे अंगूठे जे नीचे आयो खपे अने पोइ मुंह से बोलियो खपे शाजो दीदार ने अख जे सतत अख मिलाई खपे. બહુ બધા છે. इंजो पूरो टेम्परेचर मापी न फिर शागुद्दीन शाची आई कि 50,000 वर्ष की बंदगी भेगी थी है तदे इनके पीर जो दर्ज अने हाजर इमाम जा जे घर जा छोकरा आई इनी जे दर्जो पीर जे कोई शाबुद्दीन शाह पीर फरमायो कि जडे कोई जीव जी 5,000 वर्ष की बंदगी भेगी थी है तो मुखी कामड़िया जो इनके तरफ ये मुखी कामड़िया बैठा हूँ इन्हीं के पोते के खबर नहीं मुखी बननो की कामड़िया बननो इजी नहीं. 5,000 वर्ष की बंदगी भेगी थी. जो सपोजिंग पाकोई के जज न था करो राइट પણ મુખ્ય કામડે કે સપોઝિંગ આજી માઇન્ડ में આજ પોતે જા વિચાર હોય કે અલગ જો સ્ટેટસ ક્રો હોનો અલગ સદાય કાલી કરો કાં અલગ કનારો રાઈટ તો આકે ખબર હે આઈ પોતે કે કાં કે કમ્પેર કરો અથવા બીજા કે કમ્પેર કરો આકે ખબર હોય કે ઈ માણસ જે 50,000 जी बंदी 5,000 वर्ष की बंदी जो ભેગી થઈ હોય તો પેલે જો ઇલમ એટલો ઓછો હોય. नार बंदगी भेगी थी नहीं अने कमानी करनी की बई चीज हुई. अकड़ो माड़ू पोते मेहनत करी अने कमानी करे अने ईज माड़ू के कोई इंजो काको के डाडो के नानो के कोई वडील गुजरी भी ने अने पोते जी विल जे अंदर इनके $2 लाख दई विधे એટલે ઇંજે વચ્ચે તો હેડ છે પોતે કમાની નહીં કઈ પણ એવી રીતે તું કોઈ જો કામ કરી દે અને ही तो के दुआ करे तो तुझी बंदगी में एडिशन थी. तू कोई जो भलो करे तो मौला तुझे मुझसे राजी थी तुझी बंदगी में एडिशन करी दिए. और बंदगी અને નોલેજ કનેક્શન નહીં ના बंदगी અને નોલેજ के डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं પણ नॉलेज है ये खुदा जी बख्शिश है અને किन के नॉलेज दीनी किन के न दीनी ये खुदा जी हाथ में है. नॉलेज है ये बख्शिश है. घना माण्हू आहिनि ये यूनिवर्सिटी जी घणी डिग्रियूं आहिनि पण इन्ही जे अंदर अहिड़ी नॉलेज न आहे कि घणी वक़्ते अनएजुकेटेड माण्हू में पण मिले. न एजुकेशन ॿई चीज है नॉलेज ॿई चीज है. इनमें बहुत डिफरेंट चीज है.
हिकिड़ो यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर बच्चे સાથે બહાર નીકળ્યો हॉलीडेज में, जंगल में इनकी गड्डी फेल थी। आफ्टरनून जो टाइम थो, 4 कलाक की मुसाफरी बाकी हुई, घरे पहुंची थी, गड्डी फेल थी वही ने कुलसा में ईदा उदा इनके कोई नजर न आयो, बहुत परेशान थो। नारने इनके कोई ठिकाने से स्मोक नजर आई, એટલે એ સ્મોક ની સાઈડ में गयो तो उड़ा हकड़ी नींदो हाटू फार्मर हुआ कोई बूढ़ो माड़ू इन वटे विनी ने कहो कि मुझे गड्डी फेल थी वही, इधर कोई मैकेनिक है कि मुझे मदद करे। कई गड्डी है फलानी पूरा मेक दिया, ये थोड़ी डिटेल हुई नहीं कि चल हाल मुझे साथे दिखाड़ू के थोड़ा टूल्स पोते साथे खणी आयो। बोनेट खोले, इनके जो तू स्टार्ट कर, वो स्टार्ट करे, बस 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 $100 गिंदो से गड्डी स्टार्ट करी दिया। ये प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जो $100 गड्डी स्टार्ट करें तो के खपे तो ठीक है, नहीं तो हुए ना तो विचार कहीं बच्चा साथी आई 4 कलाक की मुसाफरी आई आया $100 धक्का कर इनके जीव के मुखे कब लाए आ बोनेट पाछो खोले અને હથોડો કાઢી આકડી જોરથી ચોટ મારી હથોડે છે, ગાડી સ્ટાર્ટ થઈ નહીં। પ્રોફેસર કે થયો કે ખાલી હકડી સ્ટ્રાઇક કરે $100 કે જી ખાલી તું હથોડો મારીને $100 ના તો જે પહેલા તો જે સાથે નક્કી કયો છે બીજી ही गाल बराबर है, तो के $100 दिया पण मुझो दिल के अंदर खटकू है, तू खाली हकड़े थोड़े $100 थोड़े जो हकड़ो $1 पण टू नो हाउ टू एंड वेयर टू स्ट्राइक $99 नॉलेज या $99 अलनसीर 11:30 થયા, 12:30 વાગ્યા સુધી હું તારી પાસે છું એટ ધી મોસ્ટ મેન। હવે તારો કઈ સવાલ છે? મને ભૂખ લાગી છે એટલે મારો મેસેજ તને મળી ગયો। આપણે ચાય પીએ પછી પાછું કન્ટિન્યુ કરીએ આઈ ગેસ। એ ટેલિપેથી થી તારા બ્રેનમાં જે he like top tape થયો હોય, but I have to admit કે I didn't absorb even 25% of the queen and the king in the story તમારે right, but he tape જો પાછી મળી શકે પોતે સ્ટડી કરીને નોટ્સ લખી શકજે, એને પછી પાંચ પોતે જો ઘર થઈ હોય પૂછી શકજે you know। $100 की स्टोरी याद? हाँ, तो टेप जो $100 पण टेप एक्वायर करे जा $2 लेकिन जो है रिकॉर्डर तो तू अलनसीब के गाल ना करे ने मुके को ना पकड़े तो मैं तो कहता हूँ कि पाके रजा है कि पाके टेप मली सके you know। कुछ नहीं करो वानगी जो स्वभाव की बात कर दे, is there a separate account for स्वभाव behind वानगी, like or is it like सारा अमाल कर जे जो भी स्वभाव बोल बीजी ड्यूटीज ड्यूटी का बजाज जी वस्तु स्वभाव बराबर घणी चीजों दुनिया में इन मड़े की कीमत जुदी हुए तो स्वभाव जो अमाउंट पण जुदो हुए मड़े चीजें। हकड़ी एड़ी चीज है कि जो तो के हकड़ो यूनिट स्वभाव जो मिले અને हकड़ी एड़ी चीज है कि तो के 1000 यूनिट स्वभाव जो मिले। जुदी है तो समय के
ये आखिरी स्वभाव जो मतलब पूरा बेटा कि तुझी आत्मा के तुझी सोल के हिकिड़ी इंजेक्शन मिले एनर्जी जो हिकिड़ो पर्टिकुलर यूनिट ऐड थिए तुझी स्पिरिचुअल एनर्जी में, दैट इज स्वभाव। ऐं तो हिकिड़ो हिकिड़ी एग्जाम्पल ॾियां। युगांडा जे अंदर पंहिंजो हिकिड़ो इस्माइली हुओ 83 वर्ष पहिला। ही इस्माइली बहुत वॾो पैसे वारो, बहुत इन्फ्लुएंशियल, इनकी 200 दुकानों जुदे जुदे विलेजिस में, टाउन्स में, कॉन्गो सुधी, रुआंडा, बुरुंडी सुधी इनकी दुकानों हुयूं। इनकी दुकानों पण हुयूं, इनजा फार्म्स हुआ, इनकी जिनरीज हुयूं, अने एटलो बधो मालदार सॼे युगांडा में इन जहिड़ो सेकंड माण्हू कोई न हो। बहुत इन्फ्लुएंशियल माण्हू हो, अने इनके ब्रिटिश गवर्नमेंट अनक्राउंड किंग ऑफ युगांडा जो टाइटल ॾिना। इस्माइली हो, वारिस अली दीना मिस्रा। ना युगांडा गवर्नर के मिलनो हुए उन जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट के मिलनो बहुत मुश्किल हो। पण ही माण्हू जॾहिं गवर्नर जे घरे वञे इनके गार्ड रोकन ना, स्ट्रेट हलियो वञे विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। अने जॾहिं गवर्नर इनके नारे तो गवर्नर ऊभो थिए अने इनके कुर्सी ऑफर करे। ज्यां सुधी अली दीना कुर्सी मथे न बीहे गवर्नर पोते जी कुर्सी मथे न बीहे, ऊभो थिए। एटलो इनजो मान। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इनके अगले वक्त फरमायो ही मेहमानी रखे। ईमानी माण्हू हो, पर दुनियादारी जे अंदर बहुत वधारे इन्वॉल्व थई वियो। और चयूं कि तूं मुंहिंजो वारिस आहीं, ऐं तोखे हिकिड़ो कमु ॾींहुं मंगत जे ख़ुदावंद ॾियो। असां फरमायूं कि तूं काठियावाड़ में से गरीब 50 माण्हूअ खे हेॾा बुलाए। 50 माण्हू खे जवान हूं, तंदुरुस्त हूं अने गरीब आहिनि। इन्ही 50 खे हेॾा बुलाए इन्ही खे नंढे नंढो हिकिड़ो प्लॉट ते तुंहिंजे वटि ज़मीन बहु आहे। सचो कि तूं इन्ही खे 2-3 एकड़ 5 एकड़ जो तूं इन्ही खे प्लॉट ॾे। मिल्कत तुंहिंजी पर खेतरी कर। इन्ही खे तूं खेन पीन जी मदद कर, इन्ही खे बड़द दे हल करण माटे, अने इन्ही के तू मदद करी खेडूत करे, इनमें से अनाज वावे अने कोई पोते जी फैमिलियों बनाई ने। साथियों तू 50 फैमिलियों इधर युगांडा, रुआंडा, बुरुंडी में सेटल करी दे। ज्यां सुधी तू जीरो रोने आउं तुझी 10 वंत लेखे इंदो से माफ करा सजी जिंदगी जी 10 वंत माफ ही तू कम करी दे। भले साथ मन विचारो करी न शक्यो मौला साथे प्रॉमिस करी न करी शक्यो, नियत खोटी न हुई पर करी न शक्यो। इनजी मड़े हस्ती बस्ती मड़ मिटी वई, पेडियों मिटी वयूं, दिवाले में हलिया विया। नहीं तो अनक्राउंड किंग ऑफ युगांडा हेवर सुधी इनजो पुतड़ो हुडा लॻियलु आहे कंपाला में। प्रॉमिस न रखीने એટલે અને અહીંયા ને કે મૌલા સાથે તું બયત કે ને પ્રોમિસ કે યા મૌલા મુંજો તન મન ધન મળે આવું તો કે દિયા તો તું જે હુકમ કરને હું કબૂલ કરનો છે। અને તને મૌલા તો કે કોઈ કામ જોએ અને હિન કામ જે અંદર તું દુનિયા જે અંદર ઇન્વોલ્વ છે ને ઢીલો થઈ વિને અને લેઝી થઈ વિને, so then you have to face a punishment। तो मुझे चलो जो मतलब पूरो के हम रेशो प्रोपोर्शन की गाल करा तो कि भाई जो 50 माण्हू के आबाद करी दिए इनके खाली मेहनत करे दिया है, ये पैसा जरूर दिए उधार पाछा इनके मिली पण बिना। पर साहब जो कि तो जे ही एक्ट को
આમ એટલી ઇમ્પોર્ટન્સ દીધો છે કે તો સજી જિંદગી 10 મિનિટ માફ કરી દીધી. It's kind of a test, right? It's just a test when you પરીક્ષા. ઘણી વખતે અહીં આય કે તું હકડી નીંડી ચીજ કરે તો ખુદા જે દરબાર में वडी लिखाई खुदा जी रहमत थी. ज्ञान में आया एक ठिकाने के शस्त्र 50 वर्ष कीजे भक्ति 50,000 years. शस्त्र એટલે 1000. शस्त्र 50 वर्ष कीजे भक्ति मुर्शद केली एक ज रहती. तू 50,000 वर्ष बंदगी करे पण मौला के कदाच ये चीज पसंद नहीं तो इनके सामने तो ही चोखे जे राइस जी अकड़े ग्रेन जेटली कीमत है. मेहरबानी करी दिए तो तू इनके हकड़ो राइस जो दानो दिए तो ये 50,000 वर्ष की बंदगी लिखी. जीसस ईसा नबी अकड़े ठिकाने व्या ने फंड रेज करने माटे उभा थे. थोड़ी स्पीच किया અને પહોંચ્યો કે અહીં ફંડ નોંધાયો. તો જે જોડે કોઈ મોટો પૈસે વાળો માળું હો એટલે $1,000 કે 1,000 શિલિંગ उन जमाने जो जे कॉइन हो इनके खाना વધારે છે. वो हकड़ी डोसी आવીને 2 સેન્ટ ખણી આવી અને હિડ નહીં તો નબી ઈસા 2 સેન્ટ ગીનીને ઉભા થયા. जब नारो 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 ही डोसी 2 सेंट दीदी है अने ही 2 सेंट इंजे 2,000 शिलिंग करता बढ़ाए. तो मारू बहुत अजीब थे. कोई सवाल कहीं के साहब गाल खुलो है कि वो 2,000 देने अने इंजे समय आई चौथा के ही 2 सेंट उन करता વધારે है. फरमायो हाँ वो तो लख में से 2,000 देना है એટલે 10%. ये तो 100% दे दी. तो अमाउंट की गाल ना है नियत की गाल है. ये 100% दे दी अने वो खाली 10% दे दी. एड़ा तो दाखला सूत्र में से देता हमें पण घणा थी. पहले सो आपने पहले अच्छा बिफोर आई स्टार्ट एक चीज મને કેવી છે તમે લોકો બધા ખાને થી સીધા આવ્યા છો આપણા ઘરે ને બરકત લઈ આવ્યા છો એના માટે ઘણી આભાર માનું છું ને એ બરકત તમને પાછી દઈ દઉં છું. એટલે તમે એમ સમજો કે આ